ओके, सो जिस तरह हमने लास्ट क्लास में बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एंड ये आपको याद रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि दिस माइट बी आस्क्ड ड्यूरिंग योर MSQ प्रिपरेशन। ओके, सो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि दे कैन सेल्फ असेंबल। ओके, अब सेल्फ असेंबल का मतलब क्या है, ऑल्दो ये हम आगे भी देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर कार्बोहाइड्रेट का कोई मॉलिक्यूल है, इट कैन बाइंड विद अनदर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ओके, एंड दे कैन फॉर्म अ चेन एंड दे कैन फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन है तो वो ऐसे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। सेम गोज ट्रू विद द प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ATGC ज्वाइन कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैन बी ईदर RNA, और if like two of strands are there and like they are complementary to each other, they are going to form the DNA. Okay, so they can self assemble into cellular structures or complexes. So for example, last class में मैंने बोला था कि lipids जो है for example helps in the formation of the cell membrane. Okay, so आपने बायोलिपिड लेयर के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे जान लो। So for example, so there is a head, right? So this is hydrophilic head and there is a hydrophobic carbon chain. So when multiple of these actually binds, they can form this particular cell membrane. Okay, so cell is something like this. Okay, so these are basically made up of these lipids. तो ये बायोलिपिड्स होते हैं, ये हम आने वाले जब हम लिपिड्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑल्सो दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। द सेकेंड थिंग इज दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब ईच अदर का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, प्रोटीन जो है वो लिपिड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, प्रोटीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो लाइक देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज दीज इंटरेक्शन आर वीक एंड रिवर्सिबल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन अगर यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, सो दीज बाइंडिंग इज वेरी वीक एंड इट कैन बी रिवर्स्ड, ओके। एंड द फाइनल थिंग इज ऑल ऑफ दीज लाइक 4 biomacromolecule have 3 dimensions shape and structure due to which they have particular functionality. Okay, so you have to remember these points as these are going to help during your MSQ section. Okay, so now let us start and understand what a cell actually is. Okay, so you must be familiar with a prokaryotic cell and a eukaryotic cell. Okay, so prokaryotic cell में हमारे पास कोई as a defined nucleus नहीं होता है, but in case of eukaryotes we have like defined nucleus. Okay, so for example, if this is eukaryotic cell, it will have a defined nucleus, यानी nuclear localization होगी, and it will have a nuclear membrane also. We have like certain Golgi complex. Guys, आप एक काम कर सकते हो, you can like download the eukaryotic cell and prokaryotic cell, and based on that you can check कि क्या क्या उनमें differences है, okay? So Golgi complex, not membrane, my bad. ओके, एंड जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जस्ट न्यूक्लियस के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इसमें राइबोसोम एसोसिएटेड हैं, ओके, अगर राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम RER भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो हम उसको SER भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इसका बेसिक फंक्शन आ जाता है हमारे प्रोटीन ट्रांसलेशन में, ओके। सो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक, इसको रफ भी बोलते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ लाइक पिंपलिश स्ट्रक्चर, ओके। सो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। सो ये हेल्प करता है ड्यूरिंग आवर प्रोटीन ट्रांसलेशन, while the smooth endoplasmic reticulum helps in the formation of lipids. Okay, so this is the difference that you must know about. Okay, so let me highlight this particular point. So rough endoplasmic reticulum help in the protein translation, while the smooth endoplasmic reticulum helps in the formation of lipids. ये याद रखना, ये बहुत बारी रिपीट हुआ है both in IITJAM as well as in GAT exam. Okay, so चलो in the next part. Okay, अब जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, और साथ साथ तुम नोट्स भी बना सकते हो, जिस तरह मैं ये बना रहा हूँ ये तुम साथ साथ लिख सकते हो, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स, ओके, सो दीज आर 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ओके। सो इफ यू गाइज डू नॉट नो अबाउट द डायमीटर, सो जस्ट सपोज इफ दिस इज अ परफेक्ट सर्कल, सो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज अप्रॉक्स 10 to 100 माइक्रोमीटर,
Okay, and these are surrounded by plasma membrane. So plasma membrane is also known as biolipid layer that we are going to study when we are going to study the lipids. So these are surrounded by a biolipid layer. Okay, so the plasma, so inside, so it composed of, no, not plasma. So these particular membrane is composed of lipids and proteins. Okay, so if I have to give you a zoomed structure, okay, so zoomed structure will be something like this. So for example, this is bilipid layer. So this is the hydrophilic part and this is the hydrophobic part. So this is cell exterior and this is cell interior. So for example, if this is cell, so this is cell interior. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन्स भी होंगे. ओके, सो कुछ जो प्रोटीन है वो पूरा आपका लिपिड लेयर भी ले सकता है और कुछ जो है वो सिर्फ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, यानी सिर्फ मेम्ब्रेन में ही एसोसिएटेड होते हैं. ओके, सो दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स. ओके, सो दिस पर्टिकुलर जो लिपिड लेयर है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एज वेल एज प्रोटीन्स. ओके, एंड दीज सर्व एज बैरियर. अब ये बैरियर किस किस चीज के लिए रहता है? बोथ केमिकल बैरियर एज वेल एज फिजिकल बैरियर. ओके, सो शायद मैं आपको फर्स्ट क्लास में ये बताना भूल गया, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है, राइट. सो इन बायोकेमिस्ट्री basically 3 subjects are being used together, that is physics, chemistry and biology. Chemistry and biology I have already discussed, but physics. So basically when cell is existing, right, so there will be water outside, right, which is also known as ECM, right, and this is cell. So there is some form of interaction. So this interaction can be studied in the form of force. Okay, so when a molecule and a molecule are interacting, so there is a either electropositive interaction happening, electronegative interaction is happening. Okay, so that is also a force. Okay, so due to these forces, sometimes what happens is, so there is a rush of certain molecule around this cell, and due to which cell attains or cell like experience certain force. Now to prevent from the cell from bursting, so these cell membrane are designed in such a way that they can handle a particular amount of force. Okay, so that's how it helps in mechanical protection. I hope you get it. Next page. Okay, and these cells also contains organelles. Now I know that you guys know, and that organelle is basically your mitochondria. So which is the powerhouse of cell? The mitochondria. Okay, so the organelle contained organized complexes of macromolecules that perform a certain biological function, and most enzymes are compartmentalized. Okay, and these compartmentalization is basically important for a separate biological function. So for example, if mitochondria is there, right, so it helps in ATP generation, right. So for example, an ATP generation is happening. So when we are going to study in like upcoming lectures, so we are going to see, so this ATP generation is not like biological favorable. Okay, because there are so many protons inside, so that there is a certain electronegative or force that occurs between these molecules. So there is a repulsive force. I'm not sure whether this particular term is right. So there is a repulsive force between proton atoms, and due to which there is generation of ATP, right. So this generation of ATP is happening because of this repulsive force. Okay, and these repulsive force could not exist, mark my word, these repulsive force could not exist if there is no mitochondria. So mitochondria is providing the compartment. Okay, so if you have seen the mitochondria is something like this. So like there are many proton inside, and there's a proton pump which like pumps some of the proton outside, and there's a proton pump which like pulls some of the proton inside, and in this proton pumping there is a formation of the ATP. ATP is basically our energy currency. I know ये थोड़ा सा complex है, but be with me. Okay, sometimes you only need like certain details which helps you during your MSQ preparation. Okay, so let's continue in the next lecture, because we have already exceeded the 10-minute line. So I'm not exceeding the 10-minute line because it hinders with your retention. Thank you and bye bye, and do comment if you like the video.